So let's try to go for scattering. So we will divide the scattering into 3 or 4 classes. Most probably we will finish in 3 classes. And the mainly we have to focus on examination. So today we will just discuss the formulation of scattering from the classical mechanics. So we will go for a classical scattering. And then we will go for quantum mechanical scattering. And in a quantum mechanical scattering, we will just try to learn first Born approximation. First, we will just try to learn Born approximation, and then we will try to learn partial wave analysis. So this will be partial wave analysis. So we have to just go for these things, and which is very important. So mainly in your exam, the 80% question will be from Born approximation, and then some basic and question from partial wave analysis. So we will try to cover all this thing. Yet there is not any question from classical scattering. So, but classical scattering is important to understand the formulation of quantum mechanical scattering. So let's try to go for how we can analyze the classical scattering and what we have to learn all about classical scattering. And on the basis of this formulation, we will just try to formulate what quantum mechanical scattering up to. Okay. So notation is very important in this particular chapter. So don't confuse with notation. Okay. This is first point. And second point, what I am trying to say that the integration part, the calculation part is very important when you are going for the Born approximation. So let's straightforward go for classical scattering. And then we will try to solve some problem based on classical scattering. In last 2 and 3 years, only 1 or 2 questions have come mainly in JEST examination from classical scattering, not any problem in NET exam. In fact, I haven't seen any problem in GATE exam except this Rutherford scattering, which we will cover into classical as well as quantum mechanical too. Okay, so let's try to go for this particular scattering part. So first try to understand the notation. So this is our z-axis. Okay, this is our z-axis, and there is a source of force or source of potential. So this is some point source, and we are just talking about a spherical symmetric system. Okay, we are just talking about a spherical symmetrical system. So this is very important that we have to just go for a spherical symmetric system. That means the potential is function of R, and the force is basically minus del V upon del R. In which direction? R cap direction. So this is very important that we have to work only for the central force problem. Otherwise, thing will be very complicated. Okay. And in general, we have this sort of potential where at plus infinity and minus infinity, it is just going to decay up to 0. So up to some limit, there is a influence of potential up to some particular point. And so why we can just assume that this spherical region is a region where you have influence of this particular potential. Mainly in this region, you have some sort of influence, and your particle is coming from very far away. And what you have to do, you have to send the particle. So you will just send the particle, and particle will come under this influence, and finally it will scatter. So mainly scattering is for the repulsive potential in general. And this is the minimum distance
this is your minimum distance. So particle is coming from here. So this will be your, and you can identify this is your turning point also. So this will be some R minimum. And if we are taking the asymptote from here, this angle is basically a scattering angle. Please mind it, this is your Z axis. Now, please try to remember, if the potential is central potential, then motion is confined into what? Two-dimensional plane, isn't it? Yes, sir. Okay. एक नोटेशन को फिर से ध्यान में रख लो. अगर टू डायमेंशन प्लेन में हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट था, सो इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर मैं आपको याद हो केपलर्स प्रॉब्लम के लिए, सो दिस इज माय आर एंड दिस एंगल इज थीटा, इजंट इट? ये था ना? Yes, sir. सो दिस थीटा इज इन प्लेन. किस प्लेन में है ये? एक्स वाई प्लेन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Sir, XY. Yes, sir. This theta is in Yes, sir. xy plane. Okay, and this theta is making angle with respect to minimum distance. इसी के साथ तो एंगल बना रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. So this is your theta. So जो polar angle हम जो यहाँ पर use कर रहे हैं, we are using that polar angle. वो किसके साथ एंगल बना रहा है? That is making, that is जो प्लेन में जो एंगल बना रहा है, that is making with this particular axis. इसके साथ जो एंगल बन रहा है. For example, what I am going to say, suppose this is my R. Then this angle, ये जो एंगल है, this angle is basically what angle? ये एंगल वो एंगल है जो कि हमारा सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में थीटा का यूज किए थे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, वो sir. आपका टू डायमेंशन प्लेन में फाई भी कह सकते हो, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. जैसे केपलर्स पोटेंशियल में हमने लिखा था ना, L by R is equal to 1 plus E cos theta. रिमेंबर? Yes, ये sir. थीटा किस कहां के साथ था? ये R minimum के साथ. R मिनिमम के साथ. ओके, सो दिस इज योर R मिनिमम, और उसके रिस्पेक्ट में आप ये एंगल इधर भी मेजर कर सकते हो, ये एंगल इधर भी मेजर कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू? Yes, sir. And this is your, this theta is basically making angle with the z axis, जो spherical polar coordinate में. Why we are making angle taking the spherical polar coordinate? The particle is can come into plane, it can go into this direction, 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 isn't it? सारा हो सकता है ना? Yes, sir. पार्टिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी पोटेंशियल से, तो वो अगर स्फेरिकल पोटेंशियल है, सो पार्टिकल कैन कम एंड इट कैन गो समथिंग लाइक दिस. पार्टिकल कैन कम, इट कैन गो समथिंग लाइक दिस. पार्टिकल कैन कम, सो इट विल जस्ट कम एंड आफ्टर देन इट इज मूविंग इन अ स्फेरिकल इन होल स्पेस, इजंट इट? यहां तक क्लियर sir. है ना? Are you Yes, getting sir. my point? Because this is not in plane. The whole influence is in what? In some spherical region. Okay? Now, so this is very important. So, now one very important thing is that, can I claim this angle and this angle is same? क्या मैं ये claim कर सकता हूं? कई बुक में इसको साई के थ्रू भी दिखाते हैं. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. Yes, sir. Can we claim this angle and this angle will be same? Yes, sir. कैसे? Why? Because if you can sending the particle from minus infinity, it will having the exactly same track if you are sending it with this particular distance, and this distance is B, which is popularly known as what? Impact factor. Impact factor is minimum distance, or the distance from which particle is going to send with reference to z axis. This is your B. So if you are sending the particle from here, from the B distance, then it will follow the same track. Then only classical Yes, sir. mechanics will happen, isn't it? Classically, particle have Yes, sir. same trajectory. Agreed or not? Either आप माइनस इन्फिनिटी से पार्टिकल को सेंड करो, और आप प्लस इन्फिनिटी से पार्टिकल को सेंड करो, then you have exactly same trajectory, isn't it?
So if it is same trajectory, then this R minimum must divide the whole thing into two symmetrical part. होगा या नहीं? Everyone Yes, is sir. comfortable? Yes. Yes, sir. Okay. So this is very important. So you have 2 alpha plus theta. Theta is what? Scattering angle must be equal to pi. And this is your R minimum. Now, and what is B? B is what? The distance from the reference line. ये आपका B है, जिसे आप क्या कहते हो? Impact parameter. In general, we are sending the particle from minus infinity. So here particle is more or less free particle. Particle कैसा है? Free particle. Now, what is the basic physics in whole calculation? The basic physics is that first there is conservation of angular momentum. होगा? Yes, sir. This is your first. Why it is conservation of angular momentum? Central force, sir. Because it is central force. Second, there is conservation of energy. Hoga? Yes. This is not a function of time. Your potential is itself a only function of space. So this is, we are just talking about the conservative system. So this will be basically your conservation of energy is also happen. Now, look at what is going to happen. We just take some area, and this is your circular area. Okay, this is your circular area at distance B and B plus dB. So what will be this circular area? This ring, what will be the ring of this particular area? Sir, 2 pi r dr. 2 pi B dB, है ना? Yes. So Sir, that 2 pi. value is equal to, the area is 2 pi B dB. And suppose intensity of a particle. What is intensity? Number of particle per unit area per unit time. This is your intensity of a particle, isn't it? Suppose I have intensity of a particle is I, then how many number of particle coming from this particular area? We have to multiply with I. Yes, sir. Yes. And this is nothing but what? Number of particle, which is number of particle which is incoming, isn't it? This is number of incoming particle. Now, so this is, we can easily calculate how many particle are coming per unit time from this particular ring. And after then, what we are going to do? We are putting some detectors here. And we just want to find how many particle are scattered at the angle theta plus d theta. Are you getting my point? Clear है ना? Yes, sir. इस थीटा के ऊपर कितने पार्टिकल आ रहे हैं ये हम स्कैटर्ड देखना चाह रहे हैं. So we have something this kind of situation. Yes. And you will see this will make a solid angle. ये क्या मिलेगा? आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा? Solid angle. So जो भी scattered particle है, they are coming in not in some horizontal plane, but they are coming into solid angle, isn't it? ऐसा ही तो नजर आएगा. पार्टिकल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है. Are you getting my point or not? Yes, sir. Okay. So what will be solid angle? What will be solid angle here? Sir, 2 pi sin theta d. Okay, so that value is 2 pi sin theta d theta. And this is your solid angle. And what I want what will be the actually area, at which area this particle is coming after this scattering from this solid angle. We just want to see how many particle is coming into this area, coming into this area, coming into this area. Are you getting my point?
Yes, So sir. we just want Yes, to sir. see how many particle is coming from between angle theta and theta plus d theta. Okay. So you can make this is your, so you can easily make this is your theta and this will be your d theta. Okay. So this is your solid angle. If we are multiplying with the area and that area is identified as what? Differential scattering cross section. What is differential scattering cross section? Differential scattering cross section is the how many particle which is scattered through solid angle 2 pi sine theta d theta. So this is your dimension of area and we don't know what is this particular area. So this is unknown and we just want to figure out how we can calculate this particular d theta. Now, if I will multiply with the intensity, then this number is incoming particle. Then this is what? Number of, this is what? Number of scattered particle which is scattered from solid angle d omega. And what is d omega? D omega is nothing but 2 pi sine theta d theta. This is your solid angle. So ये जो solid angle है, अगर solid angle कम होगा तो कम number of particle मिलेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा number of particle मिलेंगे. So from here, what you can do? You can easily calculate the value of d theta. यहां से मिल जाएगा value of d theta. What is d theta? I and I will also cancel. So number of incoming particle is actually number of scattered particle. So d theta is equal to क्या हो जाएगा? B upon dB upon sine theta dB upon d theta, and it should be always positive quantity because this is dimension of area. If you have dimension of d theta, अगर आपको dimension of d theta मिल जा रहा है, then you can calculate the total scattering cross section. मिल जाएगा ये. And what is your total scattering cross section? Total scattering cross section आप क्या करोगे? पूरे solid angle में से इंटीग्रेट कर दोगे? Yes या no? ये sir. किसके लिए? ये solid angle है 2 pi sin theta d theta के लिए, एक particular solid angle के लिए आप देख रहे हो. So sigma is nothing but d theta sin theta d theta d phi. This is your total scattering. So now, what is the most important challenge into the classical scattering? finding d theta. Finding d theta. But the most important challenge is that how you will find b as a function of theta, isn't it? Yes, sir. If you will find b as a function of theta, then everything is cakewalk for you. You can easily find the differential scattering cross section and you can easily find this particular total scattering cross section. So you can just figure it out what are the possibility here. Clear है यहाँ तक? कुछ पूछना है? Clear, sir. Any another person? और बाकी लोग clear हो? Yes, sir. Clear. Okay. So let's try to. Sorry, बताओ. एरिया ना डी Sorry. थीटा का डायमेंशन. हाँ, d theta is the area. देखो ये एरिया तो हम कैलकुलेट कर लिए विद द ज्योमेट्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Sutton, are you getting my Yes. point? This area you can calculate with the geometry, but this area we cannot calculate with the geometry. Are you getting my Yes. point? This is dependent on what is the profile of potential. Are you getting this thing? Yes. So why we cannot directly calculate this particular area, but yes, hence the number of particle is conserved. So we can directly calculate, so that we can formulate such that we can easily calculate d theta. This is a wonderful trick, isn't it? Yes, sir. Okay. And this is true for only spherical symmetric system. So let's try to straightforward one or two basic problem. इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं. Clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो.
सो सबसे पहले क्या कर लें, रदरफोर्ड स्कैटरिंग कर लें। यस सर। देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग कितना मजेदार है। क्लासिकल रदरफोर्ड स्कैटरिंग बहुत कम लोग ही डिराइव करते हैं इन जनरल, है पहले ना? रदरफोर्ड, हाँ पहले से रदरफोर्ड सर। हाँ, रदरफोर्ड से ही कर लेते हैं, क्या है, कुछ है, थोड़ी बहुत आसान है, डोंट वरी भाई, हम सारा तो जानते ही हैं। रदरफोर्ड के लिए पोटेंशियल जो था, वो पोटेंशियल क्या था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये बता सकते हो? कुछ गोल्ड फॉइल Gold foil पर लेकर अल्फा पार्टिकल दिया था, है ना, और उसका एंगल देखा था, ये तो देखा था। यस यस ओके, यस सर। ठीक है। तो वो कैसा पोटेंशियल लिया था, K/R, इजंट इट? यस सर। ऐसा ही पोटेंशियल लिया था ना, K/R पोटेंशियल उन्होंने लिया था, एग्जैक्टली कूलम पोटेंशियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑल दिस पार्टिकल, जिसको क्या स्कैटर्ड कर रहा है। ओके, सो इफ इट इज K/R, व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट? 1 + E cos थीटा। याद से थोड़ी कर रहे हैं, कब से कर रहे है कि नहीं? यस सर। यस, एवरीवन इज कंफर्टेबल? ओके, सर। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये डायग्राम समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आया और ऐसे चला गया, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, एंड दिस इज योर आर मिनिमम, एंड दिस इज योर स्कैटरिंग एंगल। तो स्कैटरिंग एंगल में बड़ा थीटा से दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन से, इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और आई कैन से इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज योर अल्फा। कह सकते क्या? यस सर। देख लो, देख लें फिर से भाई, यहां से आप मेजर कर रहे हो, ये आपका आर आ गया, ये आपका आर आ गया, ये आपका आर आ गया, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर। इंफिनिटी पर जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा के इक्वल मिल जाएगा फिर। अल्फा की इक्वल मिल जाएगा। शॉर्टन समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। है ना, बिकॉज यू आर मेजरिंग योर पोलर एंगल इनटू दिस इक्वेशन, जो हमने सेंट्रल फोर्स में किया था, वो इसी के अबाउट मेजर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डोंट कंफ्यूज विद द डायमेंशन, सॉरी, डोंट कंफ्यूज विद द नोटेशन। ओके ओके, सो हियर वी हैव E cos थीटा इज इक्वल टू -1, लिख सकते हैं इसे, और E इज इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, यस r सर। टेंड्स टू इन्फिनिटी करो तो 0 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज व्हाट, E स्क्वायर, एंड दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो इसे। एंड व्हाट इज योर E, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 2E J स्क्वायर अपॉन MK स्क्वायर। यस सर। यस सर। सही है? यस सर। यस या नो? ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। इतने आसानी के साथ रदरफोर्ड आपने कभी भी नहीं किया होगा। बट ये तो इलिप्टिकल हो, हाँ ठीक है ठीक है। इलिप्टिकल के लिए कैसा है, किसी के लिए भी था, ये याद नहीं है? हाँ ई सर, की तो वैल्यू वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो रही थी। हाँ, यस सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो? नाउ लुक एट हियर, व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम J? एंगुलर मोमेंटम J इज कंजर्व। यस सर। यस, सो यहां पर ये डिस्टेंस b है, तो इसे मैं कुछ v0 वेलोसिटी से भेज रहा हूं। सो एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू व्हाट, mvb, यस एग्रीड, और mv0 भी कर लो। एंड द टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, और यही टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंज होता जाएगा। यस, यस सर। सो व्हाट इज योर v0, 2E अपॉन m, क्लियर है ना? सो नाउ आई कैन पुट J इज इक्वल टू m 2E
upon m b. Yes, and what is your j? Root under 2em into b. Yes, so I can put it here. Now हमारा purpose पूरा हो गया. This is your theta, and now look at, sorry, E is equal to cos square alpha. तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर दें? -1 अपॉन अल्फा, है ना? Cos. सॉरी, -1 अपॉन cos अल्फा. तो यहां पर क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा. नाउ you have alpha 2 alpha plus theta is equal to pi. So alpha is equal to pi by 2 minus theta by 2. Scattering angle के term में आ गया चीजें. So this value is equal to 1 upon cos square pi by 2 minus theta by 2 is equal to 1 plus 2e. J square के जगह पर क्या लिख दे? 2e m b square upon m k square. Are you people comfortable? सर So m और m cancel हो जाएगा यहां से. Yes, and now you will get the exact thing. किसके किसके बीच का रिलेशनशिप मिल गया? b और थीटा के बीच का रिलेशनशिप, isn't it? Yes. Yes. मिल गया. You have sir. relationship 1 upon sine square pi sine square theta by 2 is equal to 1 plus 4e b square upon, और e square भी होगा ना, 4e square upon k square, isn't it? यस सर And now you can have relationship b versus theta. So once you have relationship between b versus theta, and then you can easily calculate the differential scattering cross section. So आप, मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ता हूं, कर लोगे कैलकुलेशन? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना? यस सर Yes, So that sir. calculation is very simple. So you will find b is equal to, I will just write the final answer. So सर बी इक्वल टू k अपॉन 2e cot theta by 2 so that value is equal to k upon 2e cot cot theta by 2 theta by 2. Famous, है ना? सर This is your famous scattering for Rutherford. And once you will get the b, you can also get the d theta. What is your d theta? b upon sine theta db upon d theta mod value. You can easily calculate it and you can find the final value. Final value लिख दो, calculate कर लेना आप, ठीक है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. So that value is equal to d theta is equal to 1 upon 6 k square upon e square, 16 e square, and that is cosec 4 theta by 2. इजिली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? ओके, Yes, sir. सो यू कैन जस्ट फाइंड, जस्ट आपको इस तरह से याद रखना है, d थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, ये फेमस है आपका, साइन स्क्वायर सॉरी साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2. सो फॉर द स्मॉल एंगल d थीटा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 अपॉन Theta by 2 to the theta power. by 2 to the power 4, है ना? So for a small angle, d theta is proportional for the Rutherford scattering, and d theta is also proportional to 1 upon e square. So एग्जाम में आपका अगर 30 डिग्री स्कैटरिंग दिया हुआ है तो यहां पर किसके प्रोपोर्शनल है? 30 by 2 का, ठीक है? So that will be, you will just go for 15 degree to the power 4. So this thing you have to remember. Otherwise, दो बार तो डायरेक्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली. ओके, Yes, sir. क्लियर है ये? चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन.
देख लिए कितना मजेदार ढंग से बन गया है ना? हाँ सर। ओके, so let's go for next problem. So suppose the potential is some VR. Potential क्या है? Some VR है, and the minimum distance is R. Minimum distance क्या है? R. What is meaning of minimum distance? Obviously देखो, hyperbolic orbit होगा तो आपको ऐसा ही तो जाएगा ना? Yes sir. So this is your minimum distance. It is given R. R is your minimum distance. What you have to do? You have to calculate the total scattering cross section. आपको क्या calculate करना है? Total scattering cross section. So what we can do? And this is your VR. Any VR we can take. Some VR. मैं generalize कर रहा हूं. So this is my impact parameter. This angle is what? Theta. Yes. Now कैसे हम इसके अप्रोच करेंगे? So first thing, so if this is minimum distance, R minimum, that is turning point, isn't it? Yes sir. Central force problem आप कर चुके हैं बहुत अच्छे से. So R minimum क्या है? This is nothing but what? Turning point. Yes या no? Yes sir. So at the turning point, R dot की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. Yes sir. है ना? So this will be 0. Now first we will just go for conservation of angular momentum. So what is angular momentum here? MVB. Yes. Suppose and you can have some energy E से particle को भेजा जा रहा है. So what will be your MVB is the angular momentum, and what is your E? E is equal to again Half mv square. half mv square. So V is equal to what? 2E by m. So M. initial angular momentum in term of energy is equal to what? 2E m into B. क्लियर है ये? जस्ट पिछले प्रॉब्लम में जैसा किया था. यस. Yes. और इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? दैट विल बी m सिर्फ आर r स्क्वायर थीटा डॉट. Yes sir. यस या नो? इससे इस पॉइंट पर जो भी होगा वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m r स्क्वायर थीटा डॉट. नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So what is your conservation of energy? Total energy E is equal to half m r dot square plus half m r square theta dot square plus VR. यही तो होगा. At the any point E, कोई भी point R पर आप डिस्कस कर रहे हो, and this is your angle theta. This capital theta is scattering angle. They are from the spherical notation. Okay? Clear Yes, है sir. ना ये? Yes. Okay. Yes, sir. Now at R is equal to capital R, R dot is equal to what? 0. Because it is R minimum. Yes sir. So what will happen? E is equal to half m R square theta dot square plus VR. Now look at here. We can easily replace mr square theta dot with this particular thing. Replace कर सकते क्या? Yes sir. Replace कर सकते हैं. So this E is equal to half m. What is r square? एक r square को so theta dot square लेना है ना. So theta dot r square theta dot square. So इसको नीचे divide कर देते हैं. So what do you have? m r square. What will be this value? 2m e into b square by r to the power 4. Clear है ये? Yes sir. Plus some potential energy VR. So now we have
a impact parameter. Unfortunately, you can see this impact parameter is not a function of theta. है ना? Right, sir. Are you getting my point? This impact parameter is not a function of theta. But don't worry, you have to just calculate the total scattering cross section. Let's see how we will calculate it. Zero मत कर देना, okay? Because ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि zero हो जाएगा. Okay? There is some hidden part into this calculation. यहाँ तक clear है ये आपका? Yes, sir. सर हाँ बताओ. सर बोलो. इसमें जो एनर्जी पार्ट में जो थीटा है वो भी कैपिटल थीटा है। No, this theta dot. ये theta dot है. ठीक है, ये तो theta dot है. Angular velocity. Yes? यस सर। है ना? और इसमें जो थीटा है ये जो हाँ. जे में तो कैपिटल नहीं ये भी यही थीटा है. नीचे। अरे ये तो इसी पॉइंट पर कर रहे हो ना. इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ? mr² थीटा डॉट. हाँ mr²। तो ये तो थीटा चेंज हाँ। कर रहा है. एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज करेगी. Isn't it? यस सर। तो सर स्कैटरिंग एंगल कब मतलब कब अभी आएगा वो तो इट विल डिपेंड्स कि किस तरह का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे स्कैटरिंग एंगल कैसे आता है, क्यों आता है. ठीक है, क्योंकि ये आर मिनिमम दे दिया है तो एक तरह से यही तो दे दिया है. आप समझ रहे हो मैं जो बात कह रहा हूं? देखो ये एंगल तो फिक्स है. अगर ये दे दे या फिर ये देगा, या तो आर देगा या तो थीटा देगा. आर गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर आर मिनिमम देने का मतलब इनडायरेक्टली दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर थीटा. तो आपको आर मिनिमम के टर्म में निकालना है. ओके मिनिमम अप्रोच जिसे कहते हैं. You can have this type of problem. A particle is coming or a comet is coming towards the sun and the minimum approach is this r, and you have to calculate what will be the minimum approach. Depends on what is this particular b. If b will be here, then minimum approach will be less. वो ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट करेगा आपके पोटेंशियल को. Are you getting my point? यस सर। Okay, let me calculate it, then हम लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर. ठीक है. So यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे then what you will get? You have so मैंने सही किया है ना कैलकुलेशन? ओके सो यहां से आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या मिलेगा? ये आर स्क्वायर है. सो यू हैव ई माइनस वी आर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर. m कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? जस्ट चेक. सर होना चाहिए. हो रहा है सर कैंसिल. एम कैंसिल हो रहा है सर. सर m कैंसिल हो रहा है सर. नीचे m स्क्वायर आएगा सर. नीचे m स्क्वायर आएगा. स्क्वायर भी आएगा. m स्क्वायर भी आएगा ना. कहां से m स्क्वायर आएगा? सर जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे ये यहां पर करेंगे तो दिस विल बी m स्क्वायर. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो m स्क्वायर m इज कैंसिल. So this part is not there. So what we have? We have b square by 2r square. Isn't it? yes, यही है ना? सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर. 2 से 2 भी कैंसिल होगा. वेरी गुड. सो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया. सो दिस विल बी देयर. सो व्हाट इज योर b? और एक e ऊपर रहेगा. एक e यहां पर है. सो व्हाट विल बी दिस b? सो ऑब्वियसली b इज इक्वल टू r square and e minus vr और by e रूट अंडर. यही है ना? तो वीआर कांस्टेंट नहीं होगा सर यहाँ पे? वीआर कांस्टेंट ही तो है. वीआर इज कांस्टेंट लिखा तो है. यस सर. वीआर इज कांस्टेंट. कैपिटल आर दे दिया. जो भी वैल्यू कैपिटल आर पर है. नाउ व्हाट इज योर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन? Your total scattering cross section is given by, this is very interesting.
So your total scattering cross section is basically d theta sine theta d theta d phi. So d phi is 2 pi always there. Now, if we are going to write this particular thing, sometime we have to use this particular value b upon sine theta db upon d theta sine theta d theta. Now, if b is not a function of theta, then this is not relevant. Are you getting my point? Yes, sir. So what will happen? This value is 2 pi b db, and that value is equal to 2 pi b square by 2, that is pi b square. Yes? Yes, sir. So you can easily calculate this particular thing. So your total scattering in this part is pi r square E minus VR by E. Look at this is dimension of area, isn't it? पाई आर स्क्वायर के टर्म में आर, अगर आपका मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ तो एक बार जेस्ट के एग्जाम में दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, मिनिमम डिस्टेंस निकालना था, निकल जाएगा? यस सर, है ना? यू कैन इजीली, है ना? सो ये मैंने आपके असाइन इसमें बुकलेट में दे रखा है कि दैट दे हैव गिवन बी, सॉरी दे हैव गिवन बी, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच. व्हाट इज आर? इज द क्लोजेस्ट अप्रोच. distance sir. Huh? So this type of question can come directly in your exam. ठीक है? So एक और क्वेश्चन कर लें या फिर कल करें, बताओ. सर कल सुबह क्लास है सर? मेरी क्लास नहीं है, मेरी तो शाम को ही होगी, मैं सुबह नहीं क्लास ले सकता हूँ उतना सुबह. सर ठीक है, सुबह से सर रात को बोलो, मैं रात भर क्लास ले लूंगा, डोंट वरी. ठीक है, सो बताओ एक और क्वेश्चन करें और कल फिर डायरेक्टली क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हैं, है ना? हाँ सर कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन आए तो डरोगे तो नहीं? नहीं सर, अब तो नहीं लगता डर. वेरी गुड. मुझसे पढ़ने के बाद डर लगा तो क्या मतलब है यार? हाँ, चलो लेट्स ट्राई टू गो फॉर हार्ड स्फीयर. नाउ सॉर्टन यू कैन सी किस तरह से थीटा का भी रोल हो सकता है ना? सो दिस इज योर हार्ड स्फीयर and this is your particle. So you can send a particle and it will go something like this. So this angle is what? A scattering angle. Okay? Yes? Anna? Yes, sir. And this, so you can just make this type of situation. So this angle is what? A scattering angle. So this is your scattering angle. And the radius of hard sphere is R. Okay? Now let us try to calculate the differential scattering cross section and total scattering cross section. यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल. सो दिस इज योर बी इम्पैक्ट पैरामीटर. व्हाट इज आवर आइडिया? वी हैव टू कैलकुलेट बी एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल थीटा. दिस एंगल इज व्हाट? अल्फा. दिस एंगल इज अल्फा. सो यू हैव 2 अल्फा plus theta is equal to pi. So alpha can be written as pi by 2 minus theta by 2. Okay? Great. So can I say this distance is also b? लिख सकते क्या? Yes, because they are parallel. So I can write b by r is equal to sine alpha. लिख सकते? So this will give you b is equal to r and this thing is sine pi by 2 minus theta by 2. So b is equal to r cos theta by 2, isn't it? Yes, sir. हो गया? आधा पर्पस तो पूरा हो गया. Yes? Yes sir.
Now you have to first go for differential scattering cross section. So that is B upon sin theta dB upon d theta. यही तो निकालना है. What is B? R cos theta by 2 by sin theta by 2. Sorry, sin theta ना, not theta by 2. sin theta. इसे डिफरेंशिएट करो. आपको मॉड वैल्यू लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. So that value is R. ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन cos theta by 2 थीटा बाई 2 इंटू 1/2 है ना. yes sir ठीक है. सो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, देन दिस वैल्यू इज व्हाट? sir sin theta पिटाई लगेगी. tan थीटा थोड़ी होगी. Sin r theta, r स्क्वायर बाई 4. square by 4 sir हो गया. r स्क्वायर Yes, बाई sir. 4. So this is your 4. differential scattering cross section. You can find r square by 4. What will be your total scattering? d theta sin theta d theta into 2 pi, because it is symmetrical system. So you have 2 pi r square by 4 into sin theta d theta 0 to pi. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. So you have 4 pi r square by 4, that is pi r square. Yes. So this is your hard sphere. कैसा है ये? Hard sphere. This is your hard sphere. So what will be the effective area from where the scattering take place? That is equivalent to circle of radius r, isn't it? जो Yes, टोटल स्कैटरिंग कितने इफेक्टिव एरिया से होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 pi r Isn't it? So 4 पाई आर स्क्वायर से पूरा स्कैटरिंग नहीं हो रहा है. इफेक्टिवली किससे हो रहा है? पाई आर स्क्वायर से ही आपका स्कैटरिंग हो रहा है. दिस इज योर क्लासिकल हार्ड स्फीयर. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन टू क्वांटम मैकेनिकल हार्ड स्फीयर? ज्यादा होगा या कम होगा? सर अभी बता देंगे तो वो खत्म हो जाएगा ना. बता दो. सर 4 pi r square 2 पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है. 4 पाई हाँ, आर हो स्क्वायर सकता की है बात सर, नहीं वो कर रहा मैं. बगैर- ज्यादा होगा या कम होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ज्यादा होगा सर. क्यों ज्यादा सर. होगा? ज्यादा होगा. आंसर याद किए हो? ठीक है, वेरी गुड. एग्जाम में टिक करके आ जाना. बट बच्चों को क्या नहीं बताओ? नहीं वो लेजेंडरी वो याद करता. अरे लेजेंडरी तो अभी ठीक है, तो बट याद क्यों नहीं है ज्यादा आपको. होगा? बिकॉज सर अभी तो नहीं याद. इन क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग देयर इज सुपरपोजिशन, है ना. सो सुपरपोजिशन होगा पार्टिकल्स के Yes, sir. डिफरेंट स्टेट का, और उस सुपरपोजिशन के कारण जो इफेक्टिव एरिया है वो पाई आर स्क्वायर से बढ़ करके 4 पाई आर स्क्वायर होगा 4 फॉर pi. लो एनर्जी. Yes, sir. और हाई एनर्जी के लिए क्या होगा? दैट विल बी 2 पाई आर सर स्क्वायर. यही होगा. pi ठीक r है. square. 2 हाई pi. एनर्जी के लिए 2 पाई आर स्क्वायर. ओके Yes, sir. ओके. सो Yes, आज sir. के लिए इतना ही रहने देते हैं. टुमारो वी विल गो फॉर बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन. ठीक Yes, है. sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके. sir.